Hi, my name is Amey Sathe. I work with Tata Mutual Fund as a fund manager. My total work is around 18 years and out of which 9 years are with Tata Mutual Fund. A brief background about my education, मैंने CFA किया है and मैंने MBA किया है and currently मैं 3 फंड्स टाटा एमएफ में टाटा म्यूचुअल फंड में मैनेज कर रहा हूँ. फ्लेक्सी कैप फंड, टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज फंड एंड टाटा यंग सिटीजन फंड. आज हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करेंगे. ये फंड हमारा 6 साल पुराना है और मैं लास्ट 1-1.25 साल से ये फंड को मैनेज कर रहा हूँ. व्हेन आई टूक ओवर द फंड लास्ट अप्रैल 2023, फर्स्ट 6 months we spent on sort of talking about or the devising the investment framework for this fund. Before we get into the Tata Flexi Cap's investment framework, a brief about the Flexi Cap fund category. Flexi Cap fund category ऐसी होती है जहाँ पे कोई भी मार्केट कैप का रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है. अगर मैं बाकी सारे फंड्स की बात करूंगा जैसे लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ AUM you have to invest in that category. So for example, mid cap would have 65% AUM in mid cap stocks or large cap would have 80% AUM in large cap stocks. लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देर इज जीरो रिस्ट्रिक्शन. अगर मुझे चाहिए तो मैं पूरा का पूरा फंड 100% लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता हूँ. अगर मुझे चाहिए तो वी कैन इन्वेस्ट एनीवेयर बिटवीन से 40 to 50% ऑल्सो इन स्मॉल कैप फंड. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड. एंड अगर आप रिटर्न की बात करोगे तो एक चीज़ फ्लेक्सी कैप फंड की ये है कि दिस इज़ अ वेरी कंसिस्टेंट फंड कैटेगरी. तो अगर मैं लास्ट 10 years और 15 years का रिटर्न अगर प्लॉट करता हूँ तो ये कैटेगरी इज़ ऑलवेज समवेयर इन द मिडल. तो कभी कभी आप स्मॉल कैप उसके ऊपर रहेगा, कभी मिड कैप नीचे रहेगा और कभी लार्ज कैप ऊपर नीचे होता रहेगा. लेकिन एक रिटर्न्स के मामले में फ्लेक्सी कैप इज अ वेरी स्टेबल एंड कंसिस्टेंट कैटेगरी, विच मीन्स फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव इट्स अ वेरी कंपाउंडिंग काइंड ऑफ अ फंड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन. दिस इज अ ब्रीफ अबाउट फ्लेक्सी कैप एज अ फंड कैटेगरी. Now I will talk about Tata Flexi Cap and our investment approach and investment framework. So as we speak, हम लोग ने ये फंड को दो sort of parts में divide किया है. 2/3 of the fund will be invested through a top-down approach and 1/3 of the fund will be invested through a bottom-up approach. मैं थोड़ा डिटेल में दोनों अप्रोचेस पे बात करूंगा so that to get a clarity what we are trying to do here. जो 2/3 फंड का जो AUM है जो हम लोग बात करते हैं टॉप डाउन है. टॉप डाउन मतलब क्या होता है कि सेक्टर रोटेशन होता है. आप एक टॉप डाउन वैल्यूएशन व्यू लो एंड अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कोई सेक्टर कोई सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ से टेम्पररी टर्बुलेंस इन टर्म्स ऑफ मार्जिन प्रेशर और ग्रोथ स्लोइंग डाउन और टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन एंड कॉन्सिक्वेंटली वैल्यूएशंस आर इन योर फेवर. So you try to go overweight on those names जहाँ पे आपको लग रहा है कि those sector would have significantly underperformed or would have significantly undervalued, और third is it is significantly underowned. कोई भी तीन में से अगर दो conditions fulfill हो रहे हैं तो हम लोग उस सेक्टर का वेटेज काफ़ी हाई रखते हैं हमारे फंड में कंपेयर टू द बेंचमार्क. सिमिलरली कोई भी सेक्टर बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, अगर वैल्यूएशन साइड पे बहुत ज़्यादा ओवरवैल्यूड लग रहा है, and normally these two things result in a fairly over ownership of that sector. So if that is the case, we go underweight on those names wherever we see a fairly exuberant kind of a valuation outlook. So this is how we are sort of structuring the 2/3 of the fund at this point. And as I said, this is a very good way of sort of managing risk also. So in a way that you exit some of the over exuberant kind of sectors and you enter a sectors which are fairly attractive on valuation. So that is on 2/3 of the fund. 1/3 of the fund will be more of a bottom up approach. ये approach हम लोग इसलिए use करते हैं because many times sector might be going through a turbulent time, but you will always find some of the opportunities in that sector. Similarly, there could be a case where sector size might be very small, but so you may not have too many options or probably 3-4 companies to invest in. So those opportunities you can capture here. यहाँ पे व्यू ये है कि आप कोई भी एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर लो और सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लो जहाँ पे इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड से फॉर 5-7 years, compounding effect will be very very strong, and that is how the 1/3 of the portfolio is structured around. There is also a thought process in this fund that we will always have 30-35 stocks जो हम लोग बुलाते हैं उसको कोर पोर्टफोलियो. There will always be say 14 to say 18 kind of a number of stocks जिसको हम लोग बुलाते हैं satellite portfolio. So core portfolio will remain fairly constant over a very long period. और जो satellite portfolio है जो हम लोग
टर्न करते रहते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी हम लोग को वैल्यूएशन आर्बिट्राज दिखे, जहाँ जहाँ पे भी हम लोग को लग रहा है अर्निंग्स आर इज गोइंग टू बी इन द अप ट्रेंड, हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं. पोजीशन छोटी रहती है लेकिन आउटकम्स कैन बी very very healthy if our call goes right. So this is how also we manage our risk in a way that it's a very well diversified fund. We don't take too much of a concentration calls because we always believe कि diversification is always a better way of managing risk. Not only that, हम लोग का एक इंटरनल एक लिमिट भी हम लोग डाल के रखा है कि कोई भी स्टॉक स्पेशली अगर स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी से है, if it exceeds say more than 2.5% of the fund, we keep sort of trimming it, we keep bringing down the weights. That is also in a way we manage the risk. So this is the structure of the fund. अगर मैं current positioning की बात करूँगा तो as I said, sector rotation is a very very important pillar of this fund. There are two sectors which we believe are actually qualifying or we believe that where we see a significant undervaluation or significant under ownership and or even the significant underperformance. I think BFSI fits the bill in all the three categories where we believe that there is a huge undervaluation that is going through. Second sector we believe where we think valuation may not be of a comfort, but I think under ownership is a big driver. Similarly earnings are also depressed. That is the consumer sector. कंज्यूमर सेक्टर ये ऐसा सेक्टर है कि जो प्रॉब्ली लास्ट 4-5 साल में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है एंड बिकॉज ऑफ विच उसमें काफ़ी ज़्यादा अंडर ओनरशिप भी आई है. वैल्यूएशन हेडलाइन वैल्यूएशन अभी भी सस्ते नहीं होंगे, लेकिन एक चीज़ उसमें यह है कि अर्निंग्स आर फेयरली डिप्रेस्ड. अगर मैं फ्रंट लाइन FMCG स्टेपल कंपनीज की बात करूँगा तो क्लियरली वॉल्यूम्स आर ग्रोइंग एट सिंगल डिजिट एंड दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ सस्टेनेबल आउटकम फॉर अ कंट्री लाइक India. Obviously, last 2-3 years have been fairly challenging for the sector. Inflation was very high. Similarly, monsoon has been fairly poor, especially in the last year. But lot of things are now changing. अगर मैं rural की बात करूँगा तो rural में we are clearly seeing a decent uptick. Monsoons this time around rains have been quite satisfactory. Most of the places we are seeing a very good rainfall distribution. So which means logically even agri should also do well. And net consumer अगर अर्निंग्स डिप्रेस्ड है तो whenever there is a uptrend you always get a very good operating leverage. So consumer staples, consumer discretionary, consumer durables is the space where we have a fairly large overweight positions. तो अगर मैं positions की बात करूँगा तो बैंकिंग सेक्टर का वेट रहेगा anywhere between 30-32%. कंज्यूमर all the three categories वेट रहेगा anywhere between 18%, 16 to 18%. So say almost 50% of the fund will be in these two sectors. रिमेनिंग 3-4 सेक्टर्स जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ये फंड में वो है से फार्मास्यूटिकल्स. सो फार्मा सेक्टर विल बी समवेयर अराउंड 7-8%. अगेन वेरी वेल स्प्रेड अक्रॉस CDMO अपॉर्चुनिटी, हॉस्पिटल अपॉर्चुनिटी एंड डोमेस्टिक फार्मा अपॉर्चुनिटी. सो अगेन अ वेरी गुड कंपाउंडिंग मशीन्स दैट वी हैव इन आवर फंड. फोर्थ सेक्टर वेयर वी बिलीव I think there can be still a compounding story is a power sector. So we have one power generation company as well as one power distribution company. So clearly very well diversified fund, very well I think in terms of the fund captures cyclically strong businesses. So it is in a way I will say business cycle plus bottom up kind of a approach for this fund. सेक्टर जहाँ पे हम लोग का कंफर्ट ज़्यादा है नहीं और डिसकम्फर्ट ज़्यादा है. 2-3 sectors. One is say defense sector where we do not have any exposure at this point because हम लोग को लगता है कि valuations are fairly stretched. Capital goods sector जहाँ पे valuations are fairly stretched. There could be a very strong near term growth. However, valuations are really out of the whack. So that another sector where we are underweight. And IT sector we are still underweight because same logic, earnings growth has slowed down. There could be bottoming out probably in Q1, but the double digit earning growth is still far away, and however valuations have already run ahead of the expectation. So this is broadly on our flexi cap fund category. It's a 6 years old fund. Since inception, or I will say for last 5 years, fund would have compounded at 20% CAGR. So this is broadly on the return side. Our aim is to have a very consistent and stable outcome from our investors perspective, and that is how we have devised our investment framework. Yeah, this is broadly on the flexi cap fund of Tata Mutual Fund. Thanks. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.